Okay. Sahil, introduce yourself. Sir, my name is Sahil Walia. I hail from Ludhiana, Punjab. I have done my schooling from Tagore Public School, and I am currently pursuing my graduation from Sri Aurobindo College of Commerce and Management, where I am doing BCom honors. And my parents, my father is a home tutor. He teaches maths up to class 10th, and my mother is also a teacher. She teaches in a school which is operated by an NGO, Noble Foundation. Mm. Which class your mother teaches? The school has only classes till 5. First. Why SIB in Bangalore? Uh, Sir, because I think SIM Bangalore will provide me with three things like the skill development. It will help me in improving my decision making skills or financial analysis. The second is industrial exposure. It will help me to take up real tasks, and the third one will be my personal development, such as improving my communication skills and my overall growth. What will you bring to SIBM? Sir, I think uh, I can be disciplined and consistent, and I can um, Discipline. Who is not disciplined these days? So you don't have anything unique which you will bring. Any self development efforts you have made? Sir, I have completed a few courses from Coursera, and I am currently doing a course on stock market from Zerodha Varsity. Which are the courses you have done already done? Sir, I have done a course on Excel, on investment, and on stock markets. Excel and stock market. What did you learn in that stock market? Sir, I have currently I have done two modules which are Introduction to Stock Markets and Technical Analysis. How the index is calculated? Sir, I haven't done that. It is very basic. Which are the top stock markets in India? Uh, Stock markets, sir, NSE and BSE. In world? In world, there are very like in US there is Nasdaq, there is a Dow Jones, and a London Stock Exchange. What was the announcement? What was the announcement made by Donald Trump yesterday in the World Economic Forum? Sir, I don't know. You don't follow the news. Thank you very much. Your interview is closed. Close करना. इतना कहने के बावजूद साइज फट गया होगा है था बियर्ड टोटली शेव ये frameless specs. Frameless as in? It's like this. Okay. If it is not a very big number, don't wear it. कितना नंबर? 4. 4 फिर तो लगानी है. हो सकता तो फ्रेमलेस बनवा लेना, ये तो कोई बात नहीं. ये तो करनी चाहिए, शुरू से बता रहे हैं. कुछ सारे बच्चे कहाँ क्या है, कोई कोई है एक ही दो, बाकी 80% 90 हो गए तो फेशियल. दैट इज द अटायर यू हैव, दैट इज द पर्सनालिटी यू शुड कैरी. विद था 90% करने का ही है शेप. अपने 5% चांस पड़ता है तो क्यों गवाएंगे. बिल्कुल एकदम क्लीन शेप, बाल भी थोड़े सेंटर से भी छोटे करने. ठीक है. सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. First of all, thank you for giving me this opportunity. नो नीड टू थैंक. फ्लैशी ओवर एक्सेस कुछ नहीं करना. नो नीड. इट इज बटरिंग. नो नीड टू बटर. वो कहेंगे आज ही अच्छे आंदे पहली स्टेज पे बटर लगा रहा है, कल कॉलेज में यही सब करता रहेगा ना. इंट्रोडक्शन स्टार्ट विद अपन ने किसी चीज में किया है ये. यू शुड जस्ट थैंक देम, थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी. नो नीड. So start with your own introduction. Okay. What is the meaning of Bhavya? Bhavya means beauty. Big, I think. Bhavya, Bhavya मंदिर बना, भव्य
I think. No, sir. It means beauty. I have searched about. अच्छा. And that भव्य भव्य आंदोलन अरेंजमेंट किया, भव्य शादी अरेंजमेंट हुआ, वो भी भव्य मंदिर बनाया, भव्य निर्माण हुआ, उसमें भव्य होता है समथिंग बिग, तो भी चेक कर लेना. ठीक है. ओके. सो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Currently, I am pursuing MBA from SCT Government College affiliated by Punjab University, and I scored 90 percentage in 10th and 90.8% in plus two. And I look forward to pursue MBA, which will align in my career goals and can provide me better business opportunities in future. Hmm. तो इसमें जो है ना ये 10th के मार्क्स प्लस टू के मार्क्स दे आर ऑलरेडी अवेलेबल विद इन द फॉर्म, वी नीड नॉट मेंशन. ओके. जैसे लुधियाना लाओ कहीं से बीच में, स्टार्ट विद लुधियाना. आई हेल फ्रॉम लुधियाना, which is Punjab's biggest city, and has and is North's leading industrial town. पेरेंट्स के बारे में बता सकते हैं. इंडस्ट्रियल टाउन, अब ये याद कर रहे हैं, पहला पिलर ये हो गया हेल फ्रॉम लुधियाना, सभी के लिए जरूरी. उनको कोई इंटरव्यू करेगा, आपको कोई करेगा, आपको कोई करेगा. तो लुधियाना खड़े होते कान खड़े होते हैं, इंडस्ट्रियल टाउन कहते हुए खड़े होते हैं, बिगेस्ट टाउन ऑफ पंजाब, इस पे कान खड़े होते हैं. इंडिया मैनचेस्टर ना, ऐसे ऐसे वर्ड नहीं बोलने. मैनचेस्टर पे ले जाएगा आपको. व्हाट इज टुडेज सिचुएशन ऑफ मैनचेस्टर, फिर ऐसे फंस जाओगे. I hail from Ludhiana, which is Punjab's biggest city and is North India's leading industrial town, famous for, अपने आप ही बोलो, famous for cycle industry, textile industry. वैसे पहले किसी टाइम स्मॉल एंड मीडियम ये जनरल पर्पस मशीन्स के लिए भी थी, अभी छोड़ देते हैं. कितने तक रहते हैं साइकिल एंड योर पेरेंट्स. आई एम right now I am pursuing BBA, SCD government college कोई लेना नहीं. BBA, and my father runs a small retail shop, small departmental store, हाँ चलो ठीक है, a small departmental store. So I have grown up seeing him manage his business and challenges every day. Okay, so that is how I had chosen BBA management as a field. Now, when I am completing my BBA in June this year, most most uh, logical next step for me looks to be MBA from a top college like yours. I am Julio from a top college like top college. 80% जैसे ही आप यहाँ पे एंड करोगे, he will ask you, so why don't you take 2 years of work X and then come for an MBA? मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हुई, तो ऐसे ऐसे आंसर आते हैं इसमें. पता नहीं की तैयारी कर रहे हो, कितना ध्यान है. आप बताओ, why don't you go for 1 to 2 years of work X and then come for an MBA? नहीं पढ़ा ना, पहले की पढ़ी नहीं वीडियो कि बस मॉक इंटरव्यू देने से हो गया कमाल. आप बताओ जी, कवर्ड है पुरानी उसमें वीडियोस में. I had applied to various companies like EY, Deloitte, and their summer internship camps, but did not secure the placement. Did not get even an interview call. Did not get an interview. And such unfortunately such companies the start should be. Unfortunately, sir, good companies don't come to our campus for recruitment.
As self development effort, I had tried to apply for to few companies which are of good repute like EY. They did not call me for an interview. Second stage. Third stage, as per the jobs which are offered to some of our seniors. फिर rigorous नहीं, rigorous तो सारी जगह रहना ही है. They are repetitive in nature and not decision making at all. Learning potential is very low. People are making data entry whole day. Accounts related data entry jobs. So first thing, when you are asked why don't you go for 1 or 2 year work ex and then come back, then come for an MBA. Come for an MBA. First things are unfortunately very few companies come to our college for campus recruitment. The companies which come and the kind of jobs they offer, as per the feedback from my seniors, they have shared that the work is repetitive in nature. We have to just do data entry kind of jobs and check the vouchers. Learning potential is very low, and the and also growth. Salary na bolna. Also the growth potential is very limited. They are not involved in any important meetings, any important discussions, any important decision making roles. So third is, I from my initiative I had tried to apply to few companies, but I did not get even. Unfortunately, I did not get any interview call. So that is why I think MBA from a top college is the most logical choice for me today. Okay. So I'll bring fresh mind. To them. So self development efforts. Uh, while preparing for the competitive exam, I've been also looking for other opportunities like courses from offline courses. Good point. ये कई बार वो नहीं पूछेगा. 50% चांस होता है पूछे. 50% होता है एंड में कह दे एनीथिंग विच इज नॉट मेंशन्ड हियर यू वांट टू शेयर और एनीथिंग वी आर नॉट डिस्कस यू वांट टू, तब ये चला सकता है. बट आई विल रिकमेंड इसको एंड ऑफ, बिकॉज आप फ्रेशर हो, जितने भी फ्रेशर बच्चे हैं, they should use whatever courses etc they have done at the end of their intro. At the end. So your intro will be hailing from Ludhiana, industrial town, father, seeing growing up, my father runs a small departmental store. I have seen from my childhood, I have been seeing him running his business. इसमें अपना contribution बता सकते हैं. हाँ आएगा, थोड़ा बहुत आएगा, पूछेगा ही वो. 80% चांस है वो पूछेगा. और मेरे ड्यूरिंग कोविड स्पेशली बना देना. ठीक है. कि कोविड में बिल्कुल ही धंधा बंद हो गया था, तो आई मेड व्हाट्सएप ग्रुप्स. आई टुक नंबर्स ऑफ द कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम हिम. आई आल्सो टुक numbers from the newspaper vendor of areas people, and I made a WhatsApp broadcast list and WhatsApp groups in the which we made a Google form in which people used to fill their requirements and we started delivering them at home. We used to be given the store like us used to be given 2 hours window during the COVID days to deliver the items at the outside the doors. So we did that and I made sure that we receive payments also, we receive bills. तो ये सब मैं कहानी बता देना कि आपने इनपुट दिया. ठीक है. इसमें मदर का रख सकते हैं कि जैसे मेरे मम्मा वो है नेल आर्टिस्ट है, तो मैं उनकी रील्स वगैरह एडिट कर देता हूँ. बना सकता हूँ. My mother is into this, so I also help her by making reels etc. So that has developed the creative side in me. ठीक है. कुछ बोलेगा तो नहीं कि दिखा दो, पे बाई चांस कह देगा तो रेडी रहना. ऑफलाइन इंटरव्यू में कह भी देगा दिखाओ, कोई खोल के रील दिखाओ जब नहीं. तो मतलब बी रेडी मेंटली एंड you should know how to reach them fast. So healing from लुधियाना बनाना फादर के बिजनेस में ही किया, छोटे होते से देखा, तब करके मैंने कॉमर्स ली. आई ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड टू हिज बिजनेस while I was also at home. We were all were confined to home during COVID. There were total loss of business, so I helped in creating an Excel sheet, Plana Dinka, creative. I also helped my mother and did it. So now and for my self development efforts, self development efforts, I have done these courses, and now I think I'll bring creativity to the class of I am having and some of the grassroots inputs I'll be able to contribute to the class. Which is your targeted specialization? My targeted specialization is marketing and finance. Why you like marketing? Marketing because I would like to connect with people and it can provide me leading opportunities and leading opportunities, and it will help me to gain expertise in various aspects and domains. Yeah, इसमें पिछला सकते ना वही थी. I like to connect with people.
I have already, I have already done some basic work, some basic work, work As I used to collect orders uh, from other people in for our the departmental store. for the field of for the field of marketing. ऑर्डर्स और वो मम्मी का डील का ये करना हो कोर्स में भी कोई किया होगा मार्केटिंग का डिजिटल मार्केटिंग का किया कुछ नहीं, डिजिटल मार्केटिंग का नहीं, स्टॉक वगैरह का करा हुआ, तो टेक्निकल्स वगैरह. which marketing campaign you have liked recently and why? I liked the marketing campaign of Red Bull. What they opted the strategy was they used to throw the empty cans in bins so that when they were in their initial stage, so people were attracted that what is this kind of drink. So from there, in the early ages of Red Bull, from there it gained the. Are these health drink, this energy drinks good for body? What are their bad effects on body? I think they are only okay if we consume once a month. Which part of the body they have the maximum effect? Liver, I think. Good. Because it is supposed to convert And also it food contains into sugar energy. that can harm us. So, what are your strengths? My strengths are that after even my strengths are that when I go through a downfall, I I I overcome that problem and come stronger after that problem. And the most common the the major strength in me is that I like to connect with people, and to uh, I like to gain the experience the seniors share with me, and I like to chat. Okay, what are the opportunities you have? देखो मेरे भाई जहाँ पे भी मौका लगेगा जैसे भी ऐसी कोई क्वेश्चन पूछता है यहाँ जब बात नहीं हुई तो अपॉर्चुनिटीज में बोलो फिर वही आई ब्रिंग ग्रास रूट knowledge of managing things at a small store. I come from a background where I have helped my mother to reach to new customers for her nail paint business through Instagram promotions, through creating reels, sending them on Facebook, etc. Instagram में बूस्ट भी लगाया था कभी हाँ जी, लगाया तो वो बोल देते हैं we apply Ads वो वगैरह. पूछेगा वो डेप्थ में जाएगा कि how did you do it on Instagram तो आप कहोगे boost how did you target the audience वो नहीं पूछेगा मैं आपसे पूछ रहा हूँ एज ए टीचर बट रेडी रखना अपना आंसर इंस्टाग्राम पे आपने पोस्ट करी फिर उसमें बूस्ट लगाया उसमें आपने रेडियस दे दिया 20 किलोमीटर ऑफ लुधियाना We used to receive calls for bookings, and I was handling calls. वो लेट फोन हो गया उसकी स्टोरी किया कैसे थोड़ा देख भी लेना नेट Ads were. हाउ इंस्टाग्राम एड्स वर्क हाउ इंस्टाग्राम बूस्ट They वर्क्स हाउ charge फेसबुक 265 rupees for each ad. वन इज दैट सेकेंडली देयर इज ए बूस्ट चार्जेस बूस्ट तो बूस्ट का समझ लेना है कि बूस्ट ही असली चीज है ठीक है इंस्टाग्राम में आपके फॉलोअर अगर हमारे जैसे 300 हैं हमने 300 पे लगाया तो कुछ नहीं होएगा अपने बच्चों ने देखा तो बूस्ट पे लगा के फिर आप उसको 300 पे लगा के आप बूस्ट करते हो बूस्ट में वो आपसे पूछता है 20 किलोमीटर का रेडियस लिया आपने लुधियाना एंड अराउंड विद इन लुधियाना नियर बाय अवर प्लेस और 30 किलोमीटर रेडियस ले लिया फिर आप कहो मैंने एज ग्रुप लिया 16 to 25 क्योंकि ये सबसे ज्यादा मैंने मदर से पूछा था कि कौन सा एज ग्रुप है जो सबसे ज्यादा नेल पेंटिंग कराता है ठीक है ना बहुत बड़े करा रहे हैं ना बहुत छोटे कराते हैं तो 16 से 25 मैंने ये एज ग्रुप आइडेंटिफाई किया फिर फीमेल कराई क्लाइंट्स वो मैसेज फीमेल्स को ही दिखेगा इंस्टाग्राम पोस्ट में तो ये ऐसे करके डिजाइन होती है फिर टाइमिंग भी होती है किस टाइम आपने लॉन्च मैं इसके बारे में पढ़ लूंगा. हाँ ये पढ़ना जरूरी है और ये आपने क्या देना है तो अपॉर्चुनिटी सो आई ब्रिंग विद मी knowledge of running a small market a sales and marketing at a very small gross a क्या store था Department. department store and of reaching out to new customers and running the marketing for a nail paint which is again a very small scale kind of a function plus I have learned some programs and so I know I'll be able to capitalize on them after I gain more depth in depth knowledge from an IM.
Weaknesses. Weaknesses. Whenever I am into hurdle, I overanalyze things, and the other weakness Now is there is a big difference between whenever and sometimes. sometimes. Small thing, small change of word, but big difference every time and sometimes. Sometimes I over analyze my mistakes. ये बोल रहे हैं, ठीक है? But I have tried to overcome it. Now, in future, what I try to do is I try to remember the lessons more, focus more on lessons and solutions rather than lessons, lessons oblique solutions rather than thinking much about my mistakes. How I will ensure the lessons I have learned, how I'll ensure that I don't repeat it, and how I can correct that situation through immediate solutions I can do. I focus on them. What is the status of Indian economy? Indian economy is showing that कोई फायदा नहीं मेरी क्लास में अंदर बैलेंस्ड आंसर नहीं है एक स्मार्ट आंसर नहीं है 1000 में से 100 बच्चों वाला आंसर नहीं है 900 वाला आंसर दे रहे हो मैंने बोला भी है there are two ways there are two situations of our economy at the same time. On the positive, we have become fourth largest economy. Our per capita, sorry, our fiscal deficit is under control. Our inflation is under control, and you should know the figures like this. तीन बोल दी positive. Then on the other side, there are the economy is also passing through tough time because our currency is now about 91, which used to be 60 something few years back. That is the other side of the economy, negative side of the economy. Secondly, per capita income, we are 141st in the world. Average income of an Indian is around jitni bhi hai 40,000 or something, which is too low. Second part of the economy, negative side of it. दो ही बता दो मोटा मोटा. So we need to improve on these also. ठीक है? अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह आगे और इश्यूज होते हैं. तब ये फायदा नहीं फिर करके कोई अगर अपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, पॉजिटिव, नेगेटिव ये सारे व्यू नहीं बता. हाउ डू यू सी ये भी पूछ हाउ डू यू सी द फ्यूचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोलो. the future of Indian economy. सर अभी देखा नहीं. Looks very bright to me. Positive, aspirational, ambitious, optimistic पिक्चर दिखेगी अब तो. आपके अंदर का देखना चाह रहा है आप क्या देश के बारे में सोचते हो. आप ऐसे पर्सन क्या हो, पेसिमिस्टिक हो, ऑप्टिमिस्टिक हो, रियलिस्टिक हो. इस टाइम में ऐसे टाइम के क्वेश्चन जब पूछता है देश के बारे में ये वो कैसा होगा तो ऑप्टिमिस्टिक रहोगे. सर आई थिंक इंडिया इज well poised to take the benefit of the demographic dividend India has, where the average age of the Indian is around 45, which is why India is also called young economy. So India is well poised to take advantage of it. I read India is very near to reaching exploration from digging of oil near Andaman Nicobar, which will be around trillions of dollars. So मैं figure निकाल के आपको दूंगा क्लास में. तो वो if you quote that India hits that 15 20 some trillion dollars worth of oil reserves, India starts generating itself. So our dollar situation will also improve. This currencies exchange rates will also improve. Our self dependence will come stronger in for energy, and that will be very big positive for the economy future. Plus, India is a self-sustaining, self-growing economy. So, number of millionaires are likely to increase by this. वो सारी figures मैं दूंगा. मैं देखूंगा आपका इकोनॉमी का आप ही का टॉपिक है किसका नहीं मेरा तो जिसका इकोनॉमी का होगा वो कुछ लाएगा तो ठीक है नहीं तो मैं अपने पॉइंट्स इकट्ठे कर ही रहा हूँ. So I'll tell you in next few years, 10, 5 years, 6 years, as per the projections, how many number of new millionaires are likely to be added in Indian economy. So many people are becoming rich now. 1 crore package, 2 crore package, they are becoming millionaires. So they will be spending more. So high value.
luxury goods, luxury items will be new opportunities. इसी में पर कैपिटा का आगे और है कि एग्रीकल्चर होना अभी आज के दिन में 5 नंबर आते हैं 10 में से। But Sir, whenever you were asking a question, I didn't have words to say. this will come. This is the first time you are giving interview, no problem. When you give third time, it will come. It happens. That is the purpose of giving mocks. So you give at least 3. I am touchwood convert हुए अच्छा यार में जाओ बढ़िया जिंदगी जियो ठीक है Sure. हाँ अभी जो जो गैप्स बताए हैं जो बताए हैं जैसे करना है इंट्रोडक्शन सारे में उस तरीके से करो और फायदा ता है जो दूसरे दिन इंटरव्यू तो सीखना है आपकी कितनी 3 होंगी आपको भाइयों की सब लोगों की यहाँ कम से कम 30 बच्चे तो कम से कम है 30 × 3 90 की रिकॉर्डिंग डालूंगा 90 सीख के जाओगे कैसे नहीं करोगे अच्छा बट कब करोगे अगर वो चीजें इनकॉर्पोरेट करोगे जो मैं बोल रहा हूँ बार बार विद डाटा फैक्ट्स पॉजिटिव नेगेटिव शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अब यूएसए का भी कोई बोले नेटो पे क्या इफेक्ट होगा इन द शॉर्ट टर्म इट इज डेफिनेटली लुकिंग टू बी वेरी बैड एंड द वे थिंग्स आर गोइंग इट इज लुकिंग दैट फॉर द लॉन्ग टर्म आल्सो इट मे बी बैड फॉर नेटो यूएसए का पूछेगा हाउ इज डोनाल्ड व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डोनाल्ड ट्रम्प ऑन यूएस तो आप कहोगे सर इन द वेरी शॉर्ट टर्म earlier, in the very short term, Donald Trump's tenure was looking to be little positive for USA because he started with the focus of making America great again. अब ये वर्ड्स अगर आपने बोल दिए इंटरव्यू में कैसे नहीं लेगा वो आपको बेवकूफ होगा जो नहीं लेगा बट बोलने वर्ड्स आपको पता होने चाहिए ना क्या कैंपेन से वो आया था बंदा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अमेरिकन के लिए फोकस किया अमेरिका एज लॉन्ग एज ही वाज फोकसिंग इट ऑन इम्प्रूविंग American, manufacturing. Even for that, if you are putting some protection giving tariffs on other countries, even including India, for American people, for American jobs, for American economy, he was doing decent job. But now what he has, from that now he has changed his total attitude towards, expansionism. Expansionism. He wants to take control of Venezuela. He wants to take control of Greenland. Canada. So this is really it's hurting America now in my view. Short term also, long term also. ठीक है इस तरह से शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म पहले क्या था शॉर्ट टर्म अब कैसा हो गया अमेरिका पे वर्ल्ड पे ऐसा लगेगा ऑल द बेस्ट गॉड ब्लेस गुड यू गिव इट शाबाश आई एम कन्वर्ट करना है आ जाओ मित्र ये So we will do it for which college? MBA'26. Okay. Papa is okay. Introduce yourself. ये तो सीधे हो गए बैठो पीछे थोड़ा सा हाँ बिल्कुल लोअर बैक लगी कहाँ दिल्ली में बुलाया इन्होंने नहीं sir, only. अच्छा बोल ओके प्रथम इंट्रोड्यूस योरसेल्फ Sir, I was born and brought up in Ludhiana. I did my schooling in Ludhiana itself. Thereafter, I continued with BBA from Shri एक चीज मिसिंग है आई मस्ट करेक्ट इट हियर सो दैट ऐसा ना हो 10 मिनट वही चलता रहे एंथुसियाज्म इज मिसिंग लुकिंग वेरी पिस्ड ऑफ दुखी अभी मेरी कॉलेज की कॉल आ गई मैं क्या करा दिस इज गेटिंग कन्वर्टेड अगर हमने देनी है इंटरव्यू तो कन्वर्ट करने के लिए देनी है 99.999% इट विल हैपन दे नीड गुड स्टूडेंट्स ये कोई इतना बड़ा कॉलेज नहीं है तो पॉइंट ये है कि हमने देने जाना इंटरव्यू अगर यार ऑनलाइन देनी है तो इस वास्ते ये सोच के देनी है कन्वर्ट करनी है इंपॉर्टेंट है तो इम्पोर्टेंट चेहरे तो भी दिखे आज के दिन जो दुखी हो कैट से नहीं आया है तो उसको थोड़ा साइड में रखना है आज जब चले गए आज जिस काम को हम कर रहे हैं बिमटेक को दे रहे हैं आज हम उसमें खुशी से एंथुसियास्टिक करेंगे कई बार होता है मैं आउट हो जाता हूँ जीरो पे बॉल किसी आगे नीचे से निकल गई या कोई एकदम ग्लव्स पे लग के कैच होगी एकदम बाउंस होगी ऐसे तो अब मैं ये थोड़ा मैं दुखी रहूँ हो गया नाउ एज ए कैप्टन इफ आई हैव चार्ज माय टीम एज ए फील्डर आई चार्ज डू द बेस्ट फील्डिंग क्लैप चीयर माय टीम बाहर से चीयर करना मेरा दूसरा प्लेयर अच्छा खेल रहा है आई बी हैप्पी फॉर हिम सो दिस इज हाउ द लाइफ इज समटाइम्स वी डोंट गेट इन द फर्स्ट शॉट व्हाट वी वांट बट व्हाटएवर वी आर ट्राइंग एट दैट मोमेंट लेट्स बी हैप्पी एंड एंथुसियास्टिक अबाउट चलो हम फिर से करो इंट्रो Sir, I was born and brought up in Ludhiana. हाँ थोड़ी सी स्माइल आ गई है उसको थोड़ा खुशी खुशी आ गई है कॉलेज में इम्पोर्टेंट है Sir, I did my schooling from Ludhiana itself. Thereafter, I continued with my
BBA from Shri Aurobindo College of Commerce and Management. Now I'm planning to pursue my MBA. My hobbies include reading, and I love playing sports like cricket and football. Uh, my mother is a homemaker, and my father runs a business of like electronic appliances. He's into what? Making, trading? No, So you he's into trading so trading of electronic appliances like air conditioners. Okay, so like mention it. So he deals in what kind of air conditioners? He deals in all types of air conditioners like residential, commercial, and industrial. Which companies? He deals in Mitsubishi, Original, Daikin, and various other companies. So all these companies have their dealers. So where is the role of a trader? Uh, a trader basically connects with the ultimate consumer and To get the order. to get So the your strength is getting orders yes. and giving it to the retailers and dealers. That's the point. No, we are involved in both wholesale as well as retail. Okay. So from what is the role? It's not coming out clear. Basically, we have to. There is a company, Mitsubishi. Yes. Then they have All India distributor. Yes. All India. They have a plant also now in India. Yes. So they have a plant. Then they have All India distributor. Then they have regional distributors. Yes. Then they have city distributors. Then they have retailers. So where you come? Under distributors, they are Okay. there are sub dealers. So you get orders for the distributor by going to certain retail counters which have multi-stored, not only Mitsubishi. They have LG, Mitsubishi, Samsung. Basically, we source our air conditioners from from distributors, Okay. and we sell to the sub dealers in the regions and all, basically in the Punjab, and also we use the word retailers rather than sub dealers. मल्टी ब्रांड रिटेलर्स क्योंकि देखिए समझे ना मेरी बात समझ गए ना कि दोज हु आर ऑलरेडी मित्सुबिशीज यू नो रिटेलर्स एक तो कंपनी का कोई शोरूम होगा एक होगा जो एक्सक्लूसिव मित्सुबिशी का फ्रेंचाइज होल्डर है तो वो तो आपसे क्यों ही लेगा वो तो सीधा कंपनी से आ रहा है उसको माल डिस्ट्रीब्यूटर भी उसके लिए शायद अप्लाई ना होता हो तो आपका गेम है मल्टी ब्रांड स्टोर्स जिसके पास सैमसंग भी है ये भी है वो जब इनके पास उसको डिस्ट्रीब्यूटर से माल मिलेगा तो वो रखेगा उसको कंपनी नहीं देगी जो कंपनी का रिटेल काउंटर है उस पर तो आएगा ही जो एक्सक्लूसिव है उसको भी कंपनी से आएगा हो सकता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू आए बट उनको तो सीधा ही जाएगा तो ये जो है मल्टी ब्रांड वाले एलजी सैमसंग ये मित्सुबिशी इनको आप कह सकते हो हाँ भाई लेना जी सर तो आपने एक क्वांटिटी उठाई हुई है डिस्ट्रीब्यूटर से एक पर्टिकुलर रेट पे उसने अपना मार्जिन कट करके आपको दे दिया तो आप इसको कहोगे हाँ भाई इतने में लेनी है 5 इसी को कहाँ दे दो वो है अपनी गेम राइट am I understanding right and we also do projects various large scale projects like how various house townships etc yes factories very good. Okay, what is the turnover of your papa's company? The turnover is around 5 to 6 crores. So why don't you join him? I did think about joining my family business, but I want to gain industry exposure after MBA. And instead of joining directly to my father's business, I want to learn some leadership skills so that I can add real value to इसमें साथ में ना लीडरशिप अच्छा है आंसर गुड है लीडरशिप प्लस मैनेजमेंट स्किल्स लीडरशिप प्लस मैनेजमेंट प्लस एक्सपोजर प्लस आई वांट टू गेन exposure I want to gain exposure of working at a top company for 2 to 3 years minimum 2 to 3 years where you will learn systems new systems new systems for marketing branding promotion distribution incentivizing people management etc ये सब आ जाएगा ठीक है ओके प्रथम what is your single biggest achievement till now person
achievement would be like a few years back. I was not uh, putting much effort into my academics like few years, but I developed a routine in which I manage my time and ओके, ये हो गया, ये सिंगल बिगेस्ट नहीं रही, ये तो छोटी मोटी हमने टाइम मैनेजमेंट की इंप्रूवमेंट करी, सीरियसनेस की। सिंगल बिगेस्ट अचीवमेंट बनाओ, जैसे उनकी बताई कोविड में। ड्यूरिंग कोविड ड्यूरिंग कोविड द बिजनेस became almost zero for 4 to 5 months, and then the summers came, and then I tried to develop a strategy by working with my father. We tried to we had to I searched from net, from Just Dial. I gave my father numbers of 150 retailers, multi-brand retailers who were not earlier our customers, and I created a broadcast list list of around 200 retailers who were already known to my father. So we started putting extra discount offers, etc., on those through that broadcast list. And we also approach the new retailers through phone, by sending them brochures, and by telling them that this normal cost of a particular AC of particular tonnage was this, but we will offer you at this. So you want it? So we did this kind of things during COVID, and by my these efforts, in the though as soon as the lockdown started, for 2 months there was zero business. We started getting to around 20% of our earlier business volume third month, and by 6 month, or by seventh month, we had reached to around 60% of our volume, which still gave us some good cash flow to run the system. I also requested my father to talk to the company, and the company also gave us 10% extra margin, etc. As a story. Okay, this can be the biggest. Which specialization you want to do? so I want to pursue my specialty in marketing. Why? So it is because I'm very enthusiastic about customer experience, and I want to like learn more about customer perceptions and what customer thinks about. Uh, Which companies you would like to work for? so I want to work in big marketplace companies like Amazon and Flipkart. They come to Wimpec. Just check it. Have you checked their website? No. I have checked. So they are coming, both of them. Very good. So why Wimpec? So it is because BIMTech has a good name in management education, and it is doing well, and uh, it has a good curriculum and good faculty, and also it focuses on experiential learning that it aligns with my career goals. Now, okay, fine है। फैकल्टी अगर इतने तक छोड़ दिया उसने, ठीक है। अगर पूछ लिया फैकल्टी बताओ कोई, तो पता है नाम किसी का नहीं पता, इतना याद कर लो, पूरी प्रोफाइल याद कर लो। इसी तरह करिकुलम में कोई एक या दो सब्जेक्ट, सर आई हैव सीन दिस सब्जेक्ट इज गुड। इसी तरह गेस्ट लेक्चर गिवर्स, इसमें आते हैं, जैसे कई बार दलाई लामा भी आता है, कई बार ये बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाते हैं, बिरलास के कनेक्शन है ना, बड़े बड़े कंपनी से आते हैं। ह्यूज। आपने भी जिस कॉलेज में देनी इंटरव्यू दे, गेस्ट लेक्चरर देखो कौन कौन आता है उस कॉलेज में, तो गेस्ट लेक्चरर एक का नाम कोई बता दे। What differentiates you from others? So the thing which differentiates me with others is the quality which like I love to take challenges, and I have the spirit to never give up, and I always try my best to achieve, and I'm a result oriented person. I always want to do my best in all aspects. Any extra development efforts, कोई courses वगैरह? Yes, sir. I have recently completed the SEBI and NISM certification on investor awareness, in which I learned different
security markets concepts. You did the program in security markets, but you want to go for marketing. You should have done something in marketing, digital marketing. I also have done in marketing itself. I have completed foundations of digital marketing, which is a course by Google. Okay. So what are the different tools of digital marketing? The different tools of digital marketing are search engine optimization, and social media marketing, email marketing, and various others. Email is a very old concept. It's not a digital one. Okay, SMM, SEO. How SEO works? So SEO basically it is basically optimizing the content of the website so that it matches with the keywords of the person who is searching for the business. And search engine optimization aims to list the business at the first. How does it work? Uh, so when the consumer searches about the product or some business, आप एक चीज मिस कर रहे हो, आपने इसको ज्यादा गहराई में नहीं पढ़ा है. You buy the keywords. The customers, like if we want to market in Ludhiana, cat preparation. If somebody searches cat preparation in Ludhiana, keywords are cat prep, preparation को छोड़िए, cat prep में buy कर दूंगा तो इसकी बोली लगेगी. मैं भी करना चाहूंगा, कोई और कॉम्पिटिटर भी 2-3 करना चाहेगा. हाँ, तो वो जैसे ही आएगा, अगर मैंने ये खरीदा हुआ होगा वर्ड और मेरा ऊपर आएगा तो नीचे ऐड लिखा होगा, स्पॉन्सर्ड लिखेगा, तो ये सब आपको पता होना चाहिए. मेन गेम है कीवर्ड्स. वो एक है जो आप कह रहे हो कि आपकी वेबसाइट में ऐसे वर्ड्स होने चाहिए जिससे आप ऊपर आओ. वो आएगा ऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक सर्च, जो नॉन पेड वाली है नीचे. अब हमारे जैसे कोई रिव्यू होंगे तो उसके कारण हम नॉन पेड में हम पहले हमारे से ऊपर हिट बोल रहे थे कि हमने कीवर्ड परचेज किया, स्पॉन्सर्ड ऐड. वो चीज है ऑर्गेनिक सर्च. क्या है ये, क्या है, इसको थोड़ा पढ़ना है. और अभी तक फिलिप कॉटलर की बुक पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? फिर क्यों नहीं पढ़ी? फिलिप कॉटलर की बुक प्लस टाटा मैग्रा-हिल पब्लिशर की मार्केटिंग मैनेजमेंट, सारा उसमें आ जाएगा. स्ट्रेटिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट साइकिल, ये दोनों पढ़ के बाकी और कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे हो जाएगा. आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है, आई थिंक 1-2 साल जॉब करके यू वांट टू कम बैक टू बिजनेस. सो देन यू गो अहेड. आपको मैं प्रिपेयर करने के लिए नहीं बोल रहा. बिमटेक करो कन्वर्ट या क्राइस करो. एसएनयू हो जाता तो एसएनयू को देखो अगर है. वो भी एसटीए में कौन नहीं हो गया. ठीक है, ठीक है, स्क्वायर के लिए ठीक हो करो. 3-4 में हुए होगे ना सिलेक्ट, फिर विजन मार लेना पापा के साथ. आई रिकमेंड तीनों जगह घूम के आओ. हैव ए फील कैंपस, बच्चे कैसा है, माहौल क्या है, हॉस्टल फिर फाइनल डिसीजन कर लो. तीनों कन्वर्ट हो जाएंगे. ये थोड़ा पढ़ने का जो गैप है वो तो भगवान करे अच्छा हो. शाबाश, ऑल द बेस्ट, खुश रहो.